Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story about the stranger in the garden. This is a story about a man who was stealing fruits from the garden without a prior permission from the gardener. It means he was doing a crime. In this story, we will learn how he was punished for his crime. Okay, but before starting the story, let me tell you the importance of learning stories in English so that you can speak English language in front of anybody. There is 4 sections of a language: reading, writing, understanding, and speaking. And in these all 4 sections, the importance one is speaking, because until you are unable to speak the language, you can't tell anybody in front of anybody that you know the language. If you know the language, then you should speak it at least. So I'm telling you that if you want to speak English language, please study story like this. And if you are learning story, it means you have confidence to speak the story in front of anybody, and then you can tell yourself that really you are on the right path to learn English language. And the importance is very clear that in this globalized era, there is no anybody who don't want to speak English language. It means there are many people those are working around the world to learn how to speak English language, because this whole world is connected with each other just because of English language. So the importance is clear, and you should try to learn it, because there is not a single school in our country which is not running even the subject in English. It means everybody is preferring English language, then why not to speak it? Okay, so come with me and learn this story bilingually. I will teach this story bilingually in front of you, but after that I will narrate stories in my own words without using bigger or critical words, without using Hindi. So let us start the story. Okay, the story is starting from here. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a man, एक आदमी था, who had a big garden, जिसके पास एक बड़ा बगीचा था. He had planted many fruits. उसने बहुत से फलों वाले पेड़ लगाए थे. And cared for them, और उनकी देख रेख की थी. Till they bore fruits, कि जब तक कि वे फल नहीं देने लगे. Now he wanted to harvest the fruits. अब वह फलों को तोड़ना चाहता था. And sell them, और उन्हें बेचना चाहता था. To make money, पैसा कमाने के लिए. For his family, अपने परिवार के लिए. Okay, one fine day, एक अच्छे दिन, while picking the fruits, फलों को तोड़ते हुए क्या हुआ? With his son, अपने लड़के के साथ, the man saw a stranger, आदमी ने एक अजनबी को देखा, sitting on the branch of a tree, एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए. And picking मतलब चुनते हुए. पिक मीन्स चुनना होता है, और चुना उसे ही जाता है जो अच्छा हो, अर्थात पका हो. इट मीन्स पिकिंग फ्रूट्स, पके हुए फल को चुनते हुए या तोड़ते हुए. द मैन बिकेम एंग्री एंड साउटेड, आदमी क्रोधित हो गया और चिल्लाया. क्या चिल्लाया? हे यू, अरे तुम, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माय ट्री, तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग, क्या तुम चुराने से शर्मिंदे नहीं हो? द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच लुक्ड एट द गार्डनर, जो अजनबी बैठा हुआ था ब्रांच मतलब शाखा पर, लुक्ड एट द गार्डनर, वह इसको देखा, माली को देखा, बट डिडंट रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया. एंड कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स, और फल को तोड़ना या चुनना जारी रखा. द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, जो गार्डनर माली था वो बहुत क्रोधित था. एंड साउटेड अगेन, और पुनः चिल्लाया. फॉर अ होल ईयर, पूरे वर्ष, आई हैव टेकन केयर ऑफ दीज ट्रीज, मैंने इन पेड़ों की देख रेख की है. यू हैव नो राइट टू टेक द फ्रूट्स, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है टू टेक द फ्रूट्स विदाउट माई परमिशन, मेरी आज्ञा के बिना फलों को लेना. सो कम डाउन एट वंस, अतः पुनः नीचे आ जाओ, अतः तुरंत नीचे आ जाओ. द स्ट्रेंजर ऑन द ट्रीज आंसर्ड, जो अजनबी पेड़ पर था वो उत्तर दिया. क्या? व्हाई शुड आई कम डाउन, मुझे क्यों नीचे आना चाहिए? दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, यह भगवान का बगीचा है. एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं भगवान का नौकर हूं.
सो आई हैव द राइट टू पिक दीज फ्रूट्स, अतः मेरे पास अधिकार है इन फलों को चुनने का या लेने का, तोड़ने का. यू शुड नॉट इंटरफियर, तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इंटरफियर मीन्स हस्तक्षेप करना. यू शुड नॉट इंटरफियर, तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए विद द वर्क्स ऑफ गॉड, भगवान के काम में, एंड हिज सर्वेंट, और उसके नौकर में. ओके, द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज, जो माली था वो बहुत आश्चर्यचकित था एट हिज दिस आंसर, इस उत्तर पर, एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और एक योजना सोची. ही टोल्ड द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी से कहा, टू कम डाउन, कि वह नीचे आए, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से. एज द स्ट्रेंजर क्लाइम डाउन, जैसे ही अजनबी नीचे आया, द ट्री मतलब पेड़ से, द गार्डनर टायर्ड हिम, जो गार्डनर था, माली था, उसे बात दिया, टू द ट्री, पेड़ से, एंड बिगॉन बीटिंग, और उसे पीटने लगा, विद अ स्टिक, एक छड़ी से. द स्ट्रेंजर बिगॉन टू स्क्रीम, जो अजनबी था वह चीखने लगा. क्यों? व्हाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो. यू हैव नो राइट टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. ओके, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. तब क्या हुआ? बट बिफोर दैट लेट मी फिक्स इट. ओके, व्हाट हैपन नेक्स्ट? तब क्या हुआ? यू हैव नो राइट टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. द गार्डनर पेड नो अटेंशन, जो माली था उसने कोई ध्यान नहीं दिया. फिर क्या हुआ? एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम, और उसे पीटना जारी रखा. द स्ट्रेंजर स्क्रीम्ड, जो अजनबी था वह क्या किया? स्क्रीम्ड. स्क्रीम मीन्स चिल्लाया. क्या चिल्लाया? डोंट यू फियर गॉड, क्या तुम भगवान से डरते नहीं हो? यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, तुम एक निर्दोष, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, एक निर्दोष व्यक्ति को पीट रहे हो. द गार्डनर आंसर्ड, माली ने उत्तर दिया, व्हाई शुड आई फियर, मुझे क्यों डरना चाहिए. दिस वुड इन माई हैंड, यह लकड़ी जो है, इन माई हैंड, मेरे हाथ में, बिलोंग्स टू गॉड, भगवान की है, अर्थात भगवान संबंधित है. एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं भगवान का नौकर हूँ. यू शुड नॉट इंटरफियर विद द वर्क ऑफ गॉड, तुम्हें भगवान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. एंड हिज सर्वेंट, और उनके नौकर में. ओके, द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड एंड देन स्पोक, जो अजनबी था वो हिचकिचाया और तब बोला. क्या बोला? वेट, इंतजार करो, रुको. डोंट बीट मी, मुझे मत मारो, रुको, मुझे मत मारो. आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, मैं फल को लेने से क्या कर रहा हूं, के लिए सॉरी बोल रहा हूं या खेद प्रकट कर रहा हूं. दिस इज योर गार्डन, यह तुम्हारा बगीचा है. एंड आई शुड सीक योर परमिशन, और मुझे तुम्हारी आज्ञा लेनी चाहिए. बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, फल को लेने से पहले या तोड़ने से पहले. सो प्लीज फॉरगिव मी, अतः कृपया मुझे माफ कर दो. एंड सेट मी फ्री, मुझे छोड़ दो. द गार्डनर स्माइल्ड, जो माली था वो मुस्कुराया. एंड सेड, और कहा. क्या कहा? डोंट यूज गॉड्स नेम, भगवान का नाम प्रयोग मत करो. टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शन, अपने गलत, इल कंसीव्ड एक्शन, अपने इल मतलब खराब या गलत, कंसीव्ड मतलब मन में बने हुए, एक्शन मतलब कार्य को जस्टिफाई, न्यायोचित मत ठहराओ. देन द गार्डनर अनटाइड हिम, तब जो माली था उसे खोल दिया. एंड सेट हिम, लेट हिम को फ्री, और उसे जाने दिया. So in this way we have learned this story bilingually. It means in these two languages, Hindi and English, we have learned this story. Okay, so right now, without seeing back, I am going to narrate a story once again in my own words. Please relearn this story once again with me, and you should do the same thing with your friends, with your student, with anybody to whom you want to tell this story. Okay, I'm going to tell this story once again. The story is all about a man who was stealing fruits from the garden without the prior permission from the gardener. So this stranger person was doing crime. Okay, so we will study this story once again. The story is starting from here. Once upon a time, there was a man. There was a gardener. He planted fruit trees in the garden, and through many years he take care of
those trees very well. When the trees started to give fruits, he was very happy to take them and sell them in the market to earn money for his family. One day, when he was working in his garden with his son, it means he was picking the fruits, ripe fruits, ripe means pake hue. He was picking the fruits from the garden. He saw a man sitting in the branch of the tree, and he was what the man was doing. The man was picking the fruits from the garden without the permission of the gardener. So seeing him, he became unhappy. He became very angry. He shouted, "Oh, hey man, what are you doing there? Why are you picking fruits without my permission?" The man told, "No, this is the garden of God, and I am the servant of God. So I am doing nothing. I am doing the same thing which is given by God. It means that belongs to me. If that thing belongs to God, that belongs to me." It means he denied the rights of that man regarding that garden. So what happened? The man told, "No, you are doing wrong. This is not right. Whatever you are doing, this is not right." But the man told, "I have thought that this is the garden of God, and I am the servant of God. I am doing nothing wrong, and I will continue to do that." The man made a plan in his mind, and he told to the gardener, "Please come down." And after many requests to the gardener, to the stranger, the stranger came down, and when he came to him, he tied him with a rope and started beating with a stick. The stranger cried or screamed and told him, "Why are you beating me? What I have done? For which thing are you beating me?" The stranger told that I am servant of God, and in my hand the wood, whatever wood you are saying, whatever the stick you are saying, that belongs to God, and I am doing nothing wrong with you. Then the man understood his trick, and the stranger understood his trick, and he understood that really he was doing crime. So he told, "Please let me go. I will not do this thing once again, because I understood that I have really done a wrong thing to you. So please let me go." So when he realized, but before that he hesitated to tell anything, but when he realized that really he accepted his crime and he will not do the same thing once again, then the gardener set him free. So I have used some different ideas over here, but the main motto of telling this story is that you should speak this story in front of anybody without hesitation. If you are doing that, then really you are on the right path to speak English language. So I have told you this story, and you have learned this story. I have done my task. Okay, so with great love to you, I am going to end my videos. Please keep on sharing this video with your friends, with your students, and if you are doing that, it means you are helping me. Okay, so with these all words, I'm going to end my videos. Please like, share, and subscribe my videos, and do comment. Thank you very much.